We diet. Start small, ले लो एक छोटा स्टेप. लिफ्ट की बदले ले लो स्टेयर्स की हेल्प. जब आए ब्रेकफास्ट की बारी, हम है ना. के बारे में कि व्हाट इज दिस कंपनी. कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन नाम बहुत कम लोगों ने सुना है. ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट फूड कंपनी है और इसका टर्नओवर इस साल कुछ $22 बिलियन के ऊपर रहेगा. ये प्रोडक्ट्स हैं, 34 कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं और ग्लोबल लीडर नंबर 1 है ग्लोब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है बेक्ड फूड्स के अंदर. बेक्ड फूड्स में क्या क्या आ जाता है? इन बेक्ड फूड्स वी ऐड ब्रेड्स, रस्क, ऑल काइंड्स ऑफ केक्स एंड रस्क बिस्किट्स. वो सब मिला के दुनिया की नंबर 1 कंपनी बाय फार. So our mission is delicious and nutritious baked goods and snacks in the hands of all, and our purpose is nourishing a better world. So nourishing a better world हमारा जो purpose है, तो हम ना सिर्फ के अच्छे प्रोडक्ट देते हैं लेकिन उसको दुनिया को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं. चाहे वो हमारी फैक्ट्री के आसपास जो लेबर रहती है, जो लोग रहते हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं. चाहे इस रेस के थ्रू हम कैसे जिन लोगों को हेल्प चाहिए उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, या एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, या और कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम दुनिया के लिए अच्छा कर सकें. सो ग्रुपो बिम्बो इंडिया में 2017 में आया था जब हार्वेस्ट गोल्ड के साथ जॉइंट वेंचर किया. उसके बाद हार्वेस्ट गोल्ड को पूरा एक्वायर किया. फिर मॉडर्न ब्रेड, जो आप सबने सुना होगा, मॉडर्न ब्रेड अभी भी साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिल्ली में नहीं है. और फिर पंजाब में किटी ब्रेड हमने एक्वायर किया 2021 में. और आज की डेट में ग्रुपो बिम्बो कंपनी जो है वो इंडिया की नंबर 1 ब्रेड कंपनी है और हम दूसरी किसी भी कंपनी से डबल से ज़्यादा ब्रेड बेचते हैं. About 4 lakh loaves of bread is served every day. 25 lakh homes are served every day in Delhi, which means roughly 1 crore people are consuming Harvest Gold bread out of the 2.5 crore plus people in Delhi. And for a very long time, it has been the number 1 brand of bread in Delhi NCR. So Harvest Gold, very briefly the products, आपने बाहर भी देखे होंगे, products display में भी हैं. We sell breads, burger buns, कुलचा, pizza base, रोटी, cakes, ये सब products हैं हमारे दिल्ली के लिए. So हार्वेस्ट और ग्रुपो बिम्बो दुनिया भर में ये रेस ऑर्गेनाइज करता है जो हार्वेस्ट गोल्ड इंडिया लेके आया है. दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेस फॉर अ कॉज. रेस फॉर अ कॉज मीन्स ये रेस सिर्फ रनिंग के लिए नहीं है, उसके अलावा कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है. 20 slices of bread. On September 24th, share the good. Bimbo Global Race. ब्रेड, होल व्हीट बर्गर्स, ये सब तो देते ही हैं, बट वी वांट टू एनकरेज अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो काफ़ी इवेंट्स करते हैं जिसकी वजह से लोगों को एनकरेजमेंट मिले कि हाउ दे कैन बी लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. नॉट ओनली फूड बट एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. लेडीज आती हैं, एवरीबॉडी इज़ एनकरेज टू पार्टिसिपेट. उसमें वॉकिंग रेस भी है, रनिंग रेस भी है, 3 किलोमीटर भी है, 5 किलोमीटर भी है, 10 किलोमीटर भी है. सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर रनर्स बट फॉर एवरीबडी, फैमिलीज, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन. So please, want to welcome you to join us on 24th September at Gurgaon to nourish a better world. Thank you. Eurofins organization, of course, a partnership. Mr. Raj Kanwar Singh and Ms. Vasundhara to kindly join us center stage for the unveiling. And I'd request friends from the major partner of this initiative, Robin Hood Army. It's 2023 T-shirts, unveiling it here for all of us, and thank you. Only when all the photos are complete, in case there are any more. Good thing like running race हो गया या कोई sports competition हो गया. It's like another medal in my cabinet के I could be associated with such a great thing like जहाँ पे आप underprivileged को support कर सको. And me being a sports person, I always like to stay fit, healthy, and in a way it's also going to help you stay fit. ऐसे
causes और भी होने चाहिए जहाँ पे you can participate and take care of your health. And in another way, you're going to support so many underprivileged kids or people out there. और इतने सारा उनको हौसला मिलता है कि हम भी आगे आएँ. We have so much of talent in India, all over the world. It's just that कभी-कभी हमारे पास वो extra help नहीं होती है. And in this way, if such रेसेस आर हैपनिंग और अगर ऐसे ही कोई हार्वेस्ट गोल्ड की तरह आगे आते हैं, सपोर्ट करते हैं इतना अच्छा नोबल कॉज, तो हमारे पास क्यों और टैलेंट नहीं आ सकता. हमारे पास इतने सारे डेफिनेटली विल गेट सो मेनी पीपल आउट देयर जो अच्छा कर सकते हैं. सो यू नो आई एम सो प्राउड टू बी हियर. आई वुड लव टू रन ऑन दैट डे विद द पीपल एंड मेक श्योर कि मेरी जिससे भी थोड़ा सा अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके तो आई विल डेफिनेटली डू दैट. And I'm so happy to know that 2,000 people have already registered. So this shows that we are there to contribute to the society. And for such great cause, we all are definitely there. I'm going to support, and I urge you all also to support and make a lot of difference and to make the world, you know, be a better place. And it all starts with us. You know, हम change ला सकते हैं society में, and it can definitely happen if we all support and come out and do the needful whatever is required. So come out there and come in numbers. I want to see you all there on 21st September. आइए गुरुग्राम में और सपोर्ट कीजिए इस कॉज के लिए. So first of all, again I would like to thank Sir Harvest Gold for doing such a great thing, and we all are going to be there, and I'm going to cheer everyone over there. So thank you so much for having me, and I wish the cause all the very best. Looking forward to see you all there. Thank you. Thank you very much, Naina. That was really heartening. Thank you very much. Please take a seat and take a look. Where is the first question coming from? And I'm going to request the dignitaries to kindly come center stage for the same so that we can get... 3-4 months पहले I was, I think 2 months पहले I was playing the Singapore Open. और वहाँ पे क्या हुआ, I was actually having this knee issue from last 1 year. तो उसमें I got to know that the cartilage is, you know, it happens with players who are playing for 23 years almost. So degeneration started in the knee. So that is showing, what I can say is inflammation whenever I'm training hard or I'm pushing a little bit more than 1 hour. So it's showing inflammation, the knee is becoming bigger. I'm not able to bend the knee, so it's causing me an issue to do the second session or the next session next day. So I've asked the doctors and they're like, you know, जो injections आते हैं
to give the cushion in the knee. So I've taken 1-2 of those injections. Of course, Olympics is like very near, it's tough, but I'm trying my level best, to come back, and the physios are helping me. But अगर वो inflammation कम नहीं होता है, so it's going to take a little bit more time. It's मैं भी half-heartedly नहीं खेलना चाहती हूँ, and of course results will not come because I know that if you are trying to compete with An Se-young or Tai Tzu-ying or Akane, it's not going to happen with just 1 hour of training. You see the level is improved so much. In fact, if you see the matches of An Se-young in the World Championships, she just moved fantastically. सब कुछ perfect था. So once you play with those high level players, you need to have that high level of game. And when you're sitting after the training thinking about the knee showing inflammation, तो tournament में भी एक round के बाद अगर वो दिखाया तो it's a negative sign. So I'm trying to sort that thing out first. And खेलना तो easy होता है, it's not that tough, but to maintain the body and not get the niggles is what is important. So I'm trying that, and I hopefully with the guidance of the physio and doctor, of course, Dinsha Padiwala. So let's see how better I recover and come back. इसके बाद coaching में Coaching is not, I never liked coaching as much. मैं रहूँगी, I'll be there to help the kids, advise the kids. But coaching के लिए it's खेलना बहुत easy होता है, as I said. But coaching देना is the toughest thing in the world. And to be a coach, you have to make your mind as a, जैसे teacher रहते हैं, very very strong, and you have to be there with the kids 13-14 hours. To think only is getting a little tough for me to imagine the coach's job. But I'm always there to advise. Of course, players की life में the career is very short. You need an academy. You want people to come and play. तो वो तो होता रहेगा. But at the moment, I'm happy. I'm taking care of the knees. Will help me out. So best can only happen if the knee doesn't show the inflammation. अगर inflammation दिखाया तो, as I said, half-heartedly तो कितना ही आप कर लोगे training में. So I'm trying my best that the knee doesn't show that kind of inflammation, and if it is happening, then the matches are going to be bad. The matches are not going to be good. So rest all depends on the practice. The better the practice, the closer the tournament. So I'm not really thinking about that much. But of course, I want to, as a player, you want to play as much as possible. You want to give your best. You have done so well for India for so many years. You don't just want to give up. You want to try your level best. I am trying my level best. So let's hope for the best. That's what I can say. And don't forget to smile. I know you've been working very hard, but please smile. Yes, thank you.